did startup before startup was cool. हमारे जो गेस्ट है उन्होंने फर्स्ट ईयर पे पहली कंपनी खोल ली थी. My co-founder was 15 years old. I was 19 years old. Google approached you. Yeah. Bro, okay. So How much money you made from the first company? सोचा नहीं था कि मैं I will be in a circle of like people who are working for Hollywood. Thank you, Rohit, for inviting me over for this podcast. Again, glad to be back in NIT Raipur. I have a very fond memory with NIT Raipur. Like I spent 4 glorious years. Few of my family members also previous generation, current. My sister is also from NIT Raipur, so I have a very strong bond and relationship with NIT Raipur. So I keep coming back, keep learning new things, keep interacting with the younger generations. Very active there in my circle. They are very encouraging. So yeah, it's a very good ecosystem. Thank you for having me here, and I'm glad that there are things like podcasts that we are doing right now. तो सर बेसिकली तो हम्बल खुद को पोर्ट्रे किए क्योंकि सर ने इतना कुछ करके रखा है अपने लाइफ में जो कि शायद से बहुत से उनका ड्रीम होता है. सर बताओ अपने अचीवमेंट्स के बारे में, तो हम्बल मत बोलो यार. यार पहली अचीवमेंट तो ये थी कि मैंने ईडी पास कर दिया. We'll get back to that because अब वहाँ पे अपन दोनों रिलेट कर सकते हैं बहुत ज्यादा. What I did, so 2011 was when I did my 12th. 1 year I took a drop and then I was like I got a product for a year. I was a vibrant. कोटा में क्या किया सर? अरे भाई पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं किया. आईटी के नारे लगाए अपने घर पे. एंड आई वाज लाइक नहीं आईटी के नीचे कुछ नहीं लेना है, एनआईटी से भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आईटी लेना है. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. कोटा में ग्रुप होते हैं ना शायद से कि वो बिहार टाइगर्स, नॉट बिहार टाइगर्स थे आपके टाइम पे? नहीं भाई मेरा कोई ग्रुप नहीं था. एंड आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, लेकिन उस साल मैंने संन्यास लिया एंड आई वाज लाइक जस्ट आई एम You were an extrovert person. आई एम ऑलवेज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन. I was an introvert till 12th. अच्छा. यहाँ पे आके बड़ा हो गया मैं. Again, like there are moments in life when you change, but I was always an extrovert person since like the start, I would say. But at Kota was 1 year where I was like नहीं बस let's get IT done. एक साल ड्रॉप लेके अब भी आपका आईटी नहीं निकले, so it is very disappointing and I was very ambitious. It was just like crushed me. तो सर बेसिकली एक साल कोटा जाके भी होम स्टेट में होम स्टेट कोटा लगा के NIT रायपुर मिला. अरे वो भी स्पॉट रहा. हाँ वो भी स्पॉट रहा. Last round ना. I was the last second closing rank. बट यू शुड सी वन थिंग कि शायद से बायोमेट्री मिला सबसे लोएस्ट ब्रांच शायद से, बट स्टिल उन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है. तो लाइफ में तुम ये मत सोचो कि ब्रांच तुमको लोअर मिला है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे बिकॉज यू कैन सी हिम. I would say कि yeah, I mean there are phases in your life. So one was like ठीक है, I came back and then I took BIT रायपुर में एडमिशन. BIT रायपुर में एडमिशन क्योंकि यार फाइनल राउंड आ गया था, एनआईटी का कुछ मिला ही नहीं. फाइनल अच्छा. तो क्या था, अब कहीं तो एडमिशन लेना पड़ेगा ना. हाँ. घर पे तो बेरोजगार बैठ नहीं सकते. बिना डिग्री की कोई इज्जत नहीं होगी मार्केट में. बेरोजगार कैसा तो? हाँ मतलब you if you are not doing anything, so I was like okay. मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था ना. BIT रायपुर में मेरा एक फ्रेंड था, he was doing, so I took admission over there. And I mean the people were nice over there, but then I got to NIT Raipur. I was in a conundrum. Should I go over to NIT Raipur or should I stay here? My dad was like, let's go to NIT Raipur, it will be a better choice. I was like, I don't think it is a better choice. Like दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि मेरे लिए ब्रांच इंपॉर्टेंट थी या फिर एक्सपोजर. एनआईटी में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर था. फर्स्ट ईयर में आई वॉज लाइक ओके, आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट अ कंपनी. यहाँ पे मेरे को इकोसिस्टम मिला, सो आई डिड स्टार्टअप बिफोर स्टार्टअप वाज कूल. 2012 की बात कर रहे हैं ना. हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, वो डोकोमो का 2G सिम चलता था, उससे हम क्रैश करके. अरे उससे एक कंपनी चला ली भाई. तो है उससे भी यू मीन टू से आपने फर्स्ट ईयर में कंपनी खोल ली थी? या आई वाज इन लाइक ब्रो फॉर रियल? 12. This was the date I got my registration done for a company called Million Minds, है ना. I was in first year and registration कर लिया हमने कंपनी में. And then I was like okay, अब तो कर लिया registration. It was a print media startup, है ना. And okay, now this is done. What do I do next? Then I was like okay, you have to learn Corel Draw, you have to make a team, you have to do this, you have to do that. I learned Corel Draw. My co-founder was 15 years old, I was 19 years old. We started a company. Docomo की सिम से हम we used to get images. So yeah, the print media startup. Let's talk about your first company, first year में. Like हमारे जो गेस्ट है उन्होंने फर्स्ट ईयर पे पहली कंपनी खोल ली थी. टू बी ऑनेस्ट मेनली मैं अभी तक मैं फोर्थ ईयर में अभी भी सोच नहीं पा लाइक आई एम रनिंग अ कंपनी, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. बट लाइक मैं फोर्थ ईयर में आके इतना कैपेबल बन चुका हूँ. बट आप फर्स्ट ईयर पे, वो भी उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं था, स्टिल यू ब्रो मतलब रिस्पेक्ट प्लस प्लस प्लस. नहीं, I would say कि my parents were encouraging, plus the faculties here were very encouraging. They
in biomedical department. They were like, okay, yeah, do it. It's a different thing. So I did that. We started this company called Million Minds, and I got it's very important when you are young. You don't have a bunch of money lying around, so you need good people to support you. I did not pay my employees. No, I will not call them employees. My teammates. I shared this idea with them, and they were happy to volunteer. And I said, okay, if you become profitable, I would be more than happy to share the royalties. I was the one who invested everything. So yeah, they were so India में if you have to start a company in print media, अगर आप magazine या newspaper चलाते हो, कंपनी करता करता क्या थी? we used to publish magazines, and Magazines. for that you need a bunch of licenses. So my dad was like, ठीक है, खुद जाओ, खुद से सीखो, you will learn. So I went to IS के पास जाना पड़ता है, आपको साइन करवाना पड़ता है. Ex officer. हाँ, आपको जाना पड़ेगा, दिल्ली में आपको लेटर्स लिखने पड़ेंगे. You have to do a bunch of stuff to get that license. So that taught me a lot of things. Then we built a supply chain कि उसको कैसे सेपरेट करना है रायपुर और भोपाल में. We built that, and I was like 19, 20. My co-founder was 15. What the hell, we will know much. And other people, nobody was older than 21 in my company. There was one guy, he was 13. So we did a bunch of stuff. We learned. We made mistakes, but I feel if you have to make mistakes, make those mistakes fast and fail fast. Mark Zuckerberg. You know, मेरा एक वीडियो है, ठीक है, उसने बोला था कि जब तुम्हारी उम्र छोटी रहती है ना, जितना तुम्हारी कम उम्र में ना, उतनी बीटी ले लो लाइफ पे, क्योंकि तुम बड़े हो गए ना, और फिर तुम बीटी नहीं ले. बीटी मतलब बैड ट्रिप. You know Okay. what is BT? I did not know this. Okay. BT is like a Gen Z Okay, thing. okay, तो BT मतलब बैड ट्रिप, मतलब कांड करना, मतलब जो कुछ करना है, कुछ हसल करना है, कुछ भी ना ट्राई करना है ना, तुम उम्र पे कर लो, क्योंकि अभी तुम पे उतनी जिम्मेदारी नहीं है. Yeah. जब तुम बड़े हो गए ना, फिर तुम पे जिम्मेदारी आ जाएगी, मे बी फैमिलीज की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अभी तो आपने जो बोला ना, व्यूअर्स, मैं आपसे कनेक्ट कर पाया सब चीज़ों में. बट अभी मेरे को जो पर्सनली लगता है, अपने कॉलेज में लोग बीटी नहीं लेते. लोग दे आर जस्ट गोइंग द प्लेस वेयर सब जा रहे. Yeah. बट माई पर्सपेक्टिव ये है, आप मेरे से बड़े हो, आप मेरे से ज़्यादा गाइड, आप पे ज़्यादा नॉलेज है, यू कैन गाइड मी. यदि आप इफ यू वांट टू बी सम लिव अ लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी और लाइक अच्छा लाइफ जीना चाहते हो, तो हाउ यू कैन लिव, जो कि सब रास्ते वही जा रहे हैं ना. Yeah. And I think वो एक Robert Frost की poem है. I don't know if you have heard this poem. Road Not Taken. Road Not Taken. Yeah, great. Sorry, Yo. I should have known. You would have known. So the Road Not Taken, I thought कि मेरी जनरेशन में वो पॉपुलर थी, आपकी जनरेशन में भी है. It's not popular in my generation also, but I read books. I read books. That's very good. So yeah, it is To be, like, if I'm being honest ना, मैं पढ़ता हूँ, बट उसने स्टॉक इतना अच्छे से किया आपको, उसने बोला कि आप किताब पढ़ते हो, तो मैंने कल रात में ही मैंने रिच डैड पुअर डैड खत्म किया, एंड थिंक एंड ग्रो रिच खत्म किया, एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. oh, nice. मैं पता है, सो के उठा मैं 1 बजे, मैं रात भर पढ़ रहा था बस किताब, ताकि मैं उससे कब से कनेक्ट कर पाऊँ किताबों में. I read more fiction, but non-fiction में मैं पढ़ता हूँ. तो yeah, I was just saying कि when you take the path less traveled, then there are chances of miraculous things happening. There is obviously a chance of disaster also striking. So कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि यार things might not work out, है ना. आप but again it should be a balance. I feel कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम बन जाओ, वो कौन सी मूवी थी ना, जिंदगी बनी वाली, जिसमें वो फोटोग्राफर बन जाता है, he is traveling the world. Again, if you have a bunch of money lying around, then you can do that. If you have a safety net, you can do that. But I think it should be a balance. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 30s में पहुंच गए, आपका करियर जीरो है. But I think balance is good. I started a company. I will tell you what I did. My marks got compromised, which was not a great idea. They got compromised to a good extent. One point I was like 6 pointers. Then I was realized कि नहीं. Me every semester. Then I realized it's good to balance, and then Okay. I started balancing, and I became 9.72 at one point also. Baba, अरे 9.72. That was yeah. 9.16 would have been better. So yeah, those were the things that I realized कि ठीक है, balance is always good. Yeah, and then due to this company, some people said कि और कर लो company वाला काम. Now you got a back in ED, now you can't slide. You are stuck in biomedical. Good for you. I was like ठीक है. But some things that do not work out in your favor actually work out in your favor in the longer run, right? So I developed an interest in biomedical. There was lesser competition, and by the time my third year came around, I developed interest in biomedical engineering. How much money you made from the first company? Not much, yeah. I just broke even, barely broke even. That's it. But how much experience you made then? A lot. A lot. That helped me a lot. To this day, it helps me a lot. I have done things which, if I would not have done those things in my entrepreneurship life, I would not have learned certain skills which are helping me a lot right now. जैसे one of the skills I knew is like talking to people, going out and reaching out to people. ना sponsorship की बात हो गई, जैसे आप यहाँ पे
Eclectica में स्पॉन्सरशिप लेने जाते हो, that teaches you a lot of things. So how I to did deal that. with people, how to make better deals. Yeah, how to sell yourself, how to talk to people, how to represent yourself, how to improve a product. Right now I'm a product manager, so I like working out smaller details, how to improve a product. So yeah, stuff like that. As far I was talking about internship, so yeah, the thing with internship was ki I wanted to go abroad, did not get a chance because my pointers were too low, and I was looking for a fully funded place, could not get anything. So I was like, ठीक है, निकालते हैं। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो फुली फंडेड देती हैं, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। आई अप्लाई टू 400 प्लेसेस। सौरभ सर से मैंने पूछा कि बताओ क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने 400 मेल्स लिखे होंगे और प्रॉपर फॉर्मल एप्लीकेशंस 200-300 तो डाल ही दिए होंगे, है ना। आई डोंट रिमेंबर, बट 400 मेल्स तो मैंने सेपरेट लोगों को लिखे थे, जस्ट बिकॉज मुझे बाहर जाना था, टू डू एन इंटर्नशिप। मुझे फील्ड से कोई लेना देना नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू गो अब्रॉड, आई हैड अ पासपोर्ट। तो घूमना था बस, घूमना था, एक्सपीरियंस करना था, ऐसा नहीं था कि मैं जाके काम नहीं करूंगा, लेकिन obviously काम करेंगे। हाँ। फिर आई गॉट एन इंटर्नशिप इन IIT गुवाहाटी, नेशनल प्रोग्राम ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस, दैट वाज वेरी गुड। आई केम बैक, देन आई गेव GRE GMAT। GRE दिया था मैंने, कैट दिया था, गेट भी दिया था। गेट होता नहीं था बायोमेडिकल में, तो कंप्यूटर साइंस से देके क्वालिफाई किया था। इंटरेस्ट था बस, क्वालिफाई करना है बस, तो आई क्वालिफाइड दैट। Yeah, that is why I was telling you earlier that कि almost all exams under the sun I have given, जो मैं eligible था जिसके लिए, I have given that। UPSC दिया है, SSC दिया है, सारी चीज़ें करी। But yeah, so after that I got placed in a company। तो लेट्स टॉक अबाउट ईडी का बैक। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ईडी में तो आपको मैंने बोला ऑफ कैमरा कैसे मैं करता था। ठीक है, एट जब उस पे लाइक सप्ली तो नहीं लगी, बट लाइक जैसी हुई थी ना सिचुएशन, मेरे को बहुत सुनाया गया था। ठीक है, एंड वो मेरे को प्रोफेसर बोला कि यू आर नॉट एबल टू इमेजिन कि ऐसे कैसे होएगा ये सब। बट आई वॉज रियली एबल टू इमेजिन दैट, बट फिर उसको मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा। सर आपका स्टोरी बताओ ना ईडी का। यार ऑनेस्टली तो आई वाज नॉट सुपर आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड। थोड़ा बहुत मैं ड्राइंग कर लेता था स्कूल में, है ना, बट कभी इतना ऐसा पैशन नहीं था ड्राइंग का। एंड देन आई केम हियर, बट आई वाज ओके व्हेन आई स्टार्टेड doing ED, but maybe I did not practice it enough first time, and I went and I drew। खराब था, लेकिन इतना भी खराब नहीं था मैं फेल हो जाऊंगा ऐसा मुझे लगा, लेकिन यू नो व्हाट हैपेंड इन वाइवा, ईडी का वाइवा में मैं पूरा सेमेस्टर कॉपी किया दोस्त का। ठीक है, मैं जब वाइवा में गया, पता नहीं मतलब मेरे को लगता है क्यों प्रोफेसर मेरे को ऐसे जान लेते हैं। मेरे को नो क्लू है कौन प्रोफेसर, बट मेरे को जानता है वो। फिर ना मेरे को तीन ना पेंसिल खींच के, मतलब एक पेपर में 3 पेंसिल मतलब लाइन खींचा, बोला कि ये बता कौन से पेंसिल का है। आई वाज लाइक क्या डिफरेंट पेंसिल यूज करने होते हैं। समझ रहे हो, आई वाज दिस दैट वाज अ बैक बेंचर। I got it। तो I gave it and I got like ये अभी भी याद है, 17 या 18 मिले थे, 20 पासिंग होता 18 तो पास होता है ना? नहीं होता यार, 18 पासिंग होता है सर। 25 पासिंग। नहीं 17.5 पास होता है एक्चुअली। 17 मिल गया तो पास होता है सर, आपने स्कैम हो गया। नहीं यार, 70 नंबर का पेपर होता था यार। ओ सर, हाँ तुम्हारा कितने का होता 50 का होता है। सॉरी तुम लोगों के लिए, यू गाइस हैव इट इजी, है ना। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में हमारे जमाने में इट वाज लाइक यदि कैमरा में कंपेयर करेगी ना, देखो आप में से मैक्स टू मैक्स 1 या 2 साल बड़े लग रहे हो। मैक्स आपकी भी उम्र 20 से 24 मैक्स, इफ यू सी दैट ऑन कैमरा। अभी आई वाज टेलिंग दिस, शी इज माय क्लासमेट, है ना, एंड शी इज both of us are like 30, she's 31, I'm 30, है ना। मैं उसको ये कह रहा था कि if you take a bag and you start like attending any bachelor's वाला class, लगेंगे नहीं अपन students। So yeah, I got 18 at that time, and I was like okay 18, now I'm like fail, I'm like yeah। और ऐसा भी नहीं कि दो नंबर दे दे ग्रेस मिल जाए, है ना, क्योंकि मुझे ये M2 में भी बैक लग गया था। I was like wow, एक बार में 2 बैक, जिंदगी में अपन कभी फेल नहीं हुए। 2 बैक किस में? M2 में, M2 माने मैथमेटिक्स 2। अच्छा मैथमेटिक्स 2, ओके। एंड लैप्लास वो सब थे क्या? याद मत दिलाओ भाई, ट्रॉमा हो गया था मुझे तो। नहीं आई वाज लाइक पता नहीं, मे बी आई डिड नॉट स्टडी सेट थ्योरी और ये सब था। लाप्लास तो थर्ड में था यार, अभी याद आ रहा है मेरे को। ऐसे ऐसे स्कैम नहीं करने का। वो तो मेरा अच्छा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, दिस वाज जेड ट्रांसफॉर्म, दिस वाज सेकंड में तो सेकंड में सेट थ्योरी था यार। अच्छा याद है। हाँ, सो आई स्ट्रगल्ड विद दैट, एंड ईडी में भी बैक लग गया। M2 के लिए मैं कोचिंग गया, ठीक है, आई पास दैट। ईडी में के लिए कोचिंग, and my mom ओके is a mathematics lecturer। है ना, तब सोच लो क्या गजब बेइज्जती की बात थी। but she was very supportive, she was like कि नहीं अब बैक तो किसी को भी लग सकता है। I went, कोचिंग करता था मैं,
फिर मैंने जूनियर्स के साथ बैठ के कोचिंग बाहर जाता था, ईडी मैंने जूनियर्स के साथ बैठ के पढ़ा। हाउ वाज द फीलिंग? आई मीन एम्बैरेसिंग तो थोड़ा था कि यार, बट इंग्लिश में आई गॉट 67 या 69, आई डोंट रिमेम्बर, 70 में से। एंड हियर आई एम लाइक यार 18 नंबर आए ईडी में, दूसरी बार दिया और कम हो गया, सिंगल डिजिट में चला गया मैं। आई डोंट रिमेम्बर कितना था, बट इट वाज सिंगल डिजिट, इतना तो याद है मुझे। मैंने बोला 5 बजे उठ के मैं 5 से 8 कोचिंग जा रहा हूँ ऑल्टरनेट NWF में, उसके बाद माय पेरेंट्स वर लाइक ये क्या हुआ, हाउ डिड इट लाइक हाउ डिड द मार्क्स डिक्रीज, बट आई थिंक टू बी फेयर एट दैट टाइम समथिंग हैपेंड, 68 people wrote that बैक वाला एग्जाम, ओनली 1 person पास। you नहीं, आई वाज नॉट द वन ना, okay तब मैं तो सिंगल डिजिट में आ गया था। okay okay देन आई 68 से एक जन पास हुए, 67 लोग फेल। हाँ, ब्रो सो दिस प्रोफेसर से खुन्नस थी क्या कुछ? आई डोंट नो, मतलब बायोटेक बायोमेड मिला के 60+ लोगों ने दिया था, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। फिर देन व्हाट हैपेंड वाज, तीसरी बार दिया मैंने, एंड देन आई गॉट 50 48 50 समथिंग लाइक दैट। नाइस। तब तक तो यार सेकंड टाइम में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, है ना। फिर भी आई वाज लाइक, सोते सोते भी अच्छा ये पेंसिल से बनेगा, ये पेंसिल से बनेगा। बस बस मेरे को ये समझ में आ गया था। अभी वी यूज्ड टू मेक दिस जोक, जो इंडिया अपने यहाँ NIT रैपर में चलता है ना, प्री मर्सी मर्सी, तो वी वर लाइक, अगर प्री मर्सी में नहीं निकला, मर्सी में गए, मर्सी में नो मर्सी। यू नो दिस टर्म्स, यू डोंट नो, यू गाइस डोंट नो दिस टर्म्स, यू डोंट नो दिस टर्म। सो इफ यू डोंट क्लियर एन एग्जाम, एक बार बैक लगा, दूसरी बार दोगे आप, ठीक है, दूसरी बार बैक लगा तो वो प्री मर्सी होता है, उसमें नहीं लगा तो लास्ट 4th अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट मिलते हैं एक पेपर को क्रॉस करने के, हमारे टाइम पे 4 मिलते थे, चारों बार में नहीं हुआ तो 1 साल डिटेन, ऐसा नहीं ईयर होता बैक, है। अपने को ईयर बैक कहते हैं। हाँ, वो ईयर बैक बोलता है, उस ईयर में आप घर पे बैठो, फिर अगले साल आप मतलब एक सेमेस्टर घर बैठो, अगले साल जूनियर्स के साथ ही आप अटेंड, तुम्हें 1 साल पीछे होगा सबके साथ, तो उसको मर्सी बोलते हैं, है ना, लास्ट इज मर्सी, मर्सी में नो मर्सी। सो आई वाज लाइक प्री मर्सी में निकल गया मैं थैंकफुली, एंड दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक यार। और फिर हमारे टाइम पे तो यार वो भी पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, हमारे टाइम पे ऐसा होता था, ईडी का ना बोर्ड लेके जाना पड़ता हाँ था, हाँ अभी तुम्हारे हाँ लेके, हाँ हाँ। और अभी वो बोर्ड्स नहीं लगे हैं क्या, नहीं बोर्ड्स लग गए, सॉरी, अपने को वो ड्राफ्टर लेके जाना, हाँ ड्राफ्टर, क्या कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं वो, ड्राफ्टर ही अरे बोलते भैया ड्राफ्टर नहीं, वो सर्कल सा रहता है, पेपर लेके जाते हैं अपन, हैं। अच्छा अच्छा, वो हाँ, जो भी कुछ कहते हैं। शीट होल्डर, हाँ तो वो तीर कमान की तरह लटका के हाँ हाँ यहाँ पे वो हाँ। ऐसे करके आना, हम लटका के जाते थे, आई वाज लाइक आई हेटेड इट लाइक एनीथिंग, बट या थैंकफुली आई क्लियर्ड इट, बट माय सम ऑफ द पीपल क्रिटिसाइज, दे आर लाइक और खोल लो कंपनी और ये कर लो, लोग लग गया बैग। वो लोग कहाँ है जो क्रिटिसाइज करते हैं आपको? ठीक है, कहीं होते तो याद रहते ना। सो नाइस नाइस। ठीक है, लोग ज्ञान देने तो बहुत आते हैं यार। मैं इतना तो रियलाइज कर चुका लाइफ में कि लोग तुमको बहुत ज्ञान देंगे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ज्ञान देंगे, बट तुमको दिमाग, मतलब तुमको समझना चाहिए कि कब तुम अपने दिमाग का शटर बंद रखो, कि तू बोल दे मैं ये कान से घुसूं, इस कान से निकालूं। I mean, it depends यार, देखो a lot of people tell you with good अच्छे इंस्टिंक्ट्स के साथ भी बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस के बाद बताएंगे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस और तुम्हारा एक्सपीरियंस और उनकी कैपेबिलिटी और आपकी कैपेबिलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। जैसे शायद से मेरे को मानना है कि आपको आपसे ज्यादा कोई बेटर नहीं जानता, तो आपके लिए कौन क्या बेटर हो सकता है कोई दूसरा नहीं बता सकता। करेक्ट, यू कम टू मी फॉर एडवाइस, आई एम लाइक व्हाट फ्यू इयर्स ओल्डर देन यू, आई विल टेल यू कि भाई ये पाथ है, उस पाथ में तुम चल सकते हो, इसमें ये पिटफॉल्स हैं, बट इट्स अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू वॉक ऑन इट और नॉट, राइट। सो yeah, that is same for like every generation, learn from older generation because they have walked that path, they have some experience, but use it selectively। और कई बार क्या होता है पता है, अभी प्रोजेक्ट आर लिमिटेशंस, इफ आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस आई विल प्रोजेक्ट ऑन यू कि यार ये मत करो, है ना, पॉडकास्ट मत करो या ये मत करो या वो मत करो, बट अगेन मैं नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं कर सकते, है ना, हो सकता है मेरे टाइम पे इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, तुम्हारे टाइम पे इट कुड बी पॉसिबल, लाइक फॉर मी पीपल आर लाइक कि why do you want to travel to this country that country, I went to this country, है ना, they are like ओ वहाँ पे तो ये भी डेंजरस है, अरे तुम्हारे लिए होगा, है ना, मैं फंसूंगा तो मैं अपने आप को निकलवा लूंगा वहाँ से। मेरे बैच में ऐसे 3-4 सर्पिले लोग थे, एक था उसने बुक लिखी थी, देवव्रत रोट अ बुक, फर्स्ट ईयर में ही हैड अ मैन्युस्क्रिप्ट, सेकंड ईयर तक आई थिंक पब्लिश करा दी थी उसने, so that was nice। So I mean, yeah, what is college? College is about learning new Exploring. things but also exploring and making mistakes, because अभी कोई consequences नहीं है, you make a mistake right now, nothing is going to happen as much, right? If you are in corporate world and you go out, then mistakes start becoming costlier। वो एक कहानी है, वो एक क्या तो एक there is a saying in रंग दे बसंती कि कॉलेज की दीवार के इस तरफ हम जिंदगी को नचाते हैं एंड वाइस वर्सा happens on that side। So I feel कि यार when you are in college, when you have this
4 साल का bandwidth, utilize it to make as many mistakes as you can. And mistakes mean कि explore those areas. Like for me, I played a lot of soccer. ठीक है, I was not Favorite football player? Christian. I'm pretty sure you would like Messi. Messi. I could guess from that reaction, Cristiano Ronaldo. So yeah, now and you should not stop experimenting. यार ठीक है, अभी मैं डेटा में हूँ, MBA कर रहा हूँ, सब सारी चीजें हैं. But I have this keen interest in shooting. I do 10 meter air rifle. People are like, यार 28 में कौन? I was 28 years old when I started doing shooting 10 meter air. There is a very old saying, Jack of all trades is master of none. Your comments or opinion? Because मैं नहीं कह रहा, बट कोई लोग कह रहे थे कि आप बहुत कुछ करके रखे, लेकिन कुछ नहीं आता आपको. हाँ, बट जितना जो मैंने पॉडकास्ट किया, आपको बहुत कुछ आता है. ठीक है. What is your comment? I mean, like, I don't care. Whatever people want to think, they can think. I'm not talking about myself. People have different strategies. Some people like to play it safe. They have depth. I feel like being a T-shaped person, कि you have a bunch of breadth in certain things. एक चीज में आपकी, एक या दो चीज में आपकी depth है. And yeah, I feel कि I understand geopolitics to a good extent. I understand product to a good extent. I am good in that. Breadth I have in other areas. So yeah, I mean, I'm happy the way I'm living, and I feel कि like I was born in 1993. Okay, if you do a rough calculation, like अगर मैं 2015 की बात करूँ, I was in third year. ठीक है, तब I did this calculation कि यार ठीक है, if I'm gonna live till like 70 years, 70, 75, तो roughly I have like 15,000 days to live, right? So every 3 years, 1,000 days pass. So I mean, yeah, life is short, man. So you should do things that give you happiness. मुझे I want to visit like every country in the world, 193 UN registered countries हैं. So that is my goal. I like shooting. I like exploring new places. I love data. दो तीन चीजें हैं which I like, and I'm like exploring that. If I don't like something, I change that and I move to a different place. So yeah, fail fast. That is what I did with Million Minds. That is what I did. I was forming a new company also. That could not unfortunately happen. But again, fail fast. Uh, take risks. Don't take uncalculated risk. आज you are like war zone country में पहुंच जाओ. So yeah, all those things I feel कि take calculated risk and have a bunch of network that will help you achieve few things in life. Bas, yeah. I know I'm talking very vaguely, but this is my mantra in life. कि Like, no, I was able to connect with you because मैं भी same mentality मेरी भी, but I know majority of people will be unable to, because वो उस तरह का कभी जिंदगी जिए नहीं है, या फिर ऐसे भी never too सोची. late, never too late. कभी भी start कर सकते हो. Like I was not super. I was comfortable in front of cameras, but कभी ऐसा exposure नहीं था. कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं I will be in a circle of like people who are working for Hollywood या फिर camera entertainment industry वाले लोगों के बीच में मैं रहूँ. But destiny has its own plans. I met someone who was working in neuroscience. Then I went and visited him, who was a story producer for a Netflix show. And then through that, I was like, okay, this is nice. Then I also मैं गूगल वाले प्रोग्राम में गया, जो गूगल मैप्स वाला प्रोग्राम. Look how dots connect, है ना. I applied for this Google local guides program in 2017. नहीं हुआ उसमें सिलेक्शन. 2018 में मैंने अप्लाई किया. I got selected. They liked me. 2019 में they were like, we are doing this ad, or you can say this video, and we want you to be a part of this. Google approached you? Yeah. Bro, okay. So this was like local guides को Google Maps का एक ad था. They were shooting this ad. They were like, okay, and we can shoot it at the location of your choice anywhere. I was like, इसको तो इंडिया में, रायपुर में, यहाँ गढ़ कलेवा में भी शॉट दैट, है ना. सो वी शॉट दैट ad over there. It was very nice. That ad was watched by my Netflix producer friend. Then I met few people. One lady who had seen that ad, she was like, "Hey, I'm doing this project. Can you help me with project?" And I'm like, Yeah, क्या sure. कर रहा हूँ मैं? मतलब I am like in data. I'm planning to do an MBA, and then there is like somebody who's doing some script. So she was an assistant producer for this movie called The Bad President. It was on Donald Trump. So that was being launched, है ना. तो उसका red carpet था. She was like, "Do you want to come over?" I was like, "Fine, क्यों नहीं?" And I went there. Even I am questioning myself कि यार क्या कर रहा हूँ? I'm like, I did a BTech and then I'm in a completely different industry. मैंने neuroscience भी कर लिया. What is happening?
But again, that was nice. I went there. I met nice people. There's a very good friend of mine. She works she worked in Grey's Anatomy. There's a friend of mine who was in Brooklyn 99. So I mean, I never thought that this is possible, but this is what happens when you have a bunch of exposure. You start meeting and running into people. They're like, oh, acha, okay, this is how you can do that. And there's a saying, Hana, what you were talking about philosophy. There's a book called Paulo Coelho's Alchemist. है ना? And Alchemist, हाँ हाँ Alchemist में somewhere along the line it says the treasure is where your heart lies, and basically वो जो कहते हैं ना, what you seek is also seeking you. So you keep running into people like that who have similar mindset as you or can provide you something to achieve that mindset. Like for example, abhi I was coming to Turkey. The guy sitting next to me was a US citizen, but he was born in Syria and he was going back to Syria. And then he was like, if you want to go to Syria, Lebanon, तो ये बात है, ये चीज़ें हैं, go and do this, which मेरे को कभी पता ही नहीं चलेगा, है ना? कोई नेट पे नहीं मिलेगा. I need somebody on the ground. अगर मुझे visit करना है safely, so somebody will show that to me. So yeah, वही है, you keep running into people, they will be like, oh okay, this मैं is ये how you मानता do हूँ ना, शायद से जब आपको कुछ चाहिए होता है ना, आप अंदर अंदर सोचते हो ना, तो यू क्रिएट सम वाइब्रेशंस थ्रू दिस यूनिवर्स एंड लाइक माइंडेड पीपल से आप इंटरेक्ट हो जाता है आपका. Yeah, you start orienting yourself in that direction, है ना? You are like, जैसे I want to visit 193 countries, that is my goal. So you start orienting yourself in that direction. You start thinking, ki, okay, what are the things that are going to facilitate this to me? And I had this dream since I was like 15 years old. So again, that brings me to this very interesting thing that we were discussing off camera. It was BRICS. So I went to the BRICS summit, no, the BRICS Youth Innovation Summit rather. This was in March of last year, and met a bunch of wonderful entrepreneurs from developing countries, right? Brazil, Russia, India, China, plus other countries like Malawi. And I realized कि यार, okay, geopolitics के knowledge होना, it's very good. If you have a bunch of geopolitics knowledge, that could be applied to anywhere. It could be applied to industry. It could be applied to entrepreneurship. There are dozen places you can apply. Now there is like Eastern Economic Forum हो रहा है in Vladivostok. Might go there. So yeah, that is my passion. कि explore करो. I love politics. I don't know if I will ever run for political office in India, but I love politics. I keep a close eye on that because yeah, it's अब you should क्या not live. आप क्या इलेक्शन लड़ने वाले हो? It should you should not be like कि यार शुतुरमुर्ग की तरह अपने अपने सिर को अपने जमीन में लगा के रखा है. That is not good. You should be aware of what is happening around the world, and if you are aware, good things can happen to you, and you can avoid bad things if you are well versed in geopolitics. Yeah. And to answer your question, if I will run for political office, not sure. नॉट Maybe. श्योर मतलब ओके. Maybe. नहीं मतलब क्या क्रेजी होगा ना, जब बंदा इतना कुछ किया फिर लास्ट में पॉलिटिक्स में घुस गया, मतलब कंप्लीट प्रोफाइल होगा वो एक. I mean, it depends. Yeah, I think the political landscape anywhere in the world needs younger people. A lot of people don't want to get into that because they think it's a dirty mess. But यार किसी को तो उतरना पड़ेगा. किसी को तो hard decisions लेने पड़ेंगे. Like तुम बुकेलेले का example ले लो. He is the president of El Salvador. He's a rock star in certain terms. I mean, I don't know him very much. I don't know his policies, but on the surface, how much ever I have read, he's a rock star. So young people need to get over there. US में देख लो, both the both the candidates who are running are pretty old. आप एक सजेशन जो फर्स्ट ईयर को देना चाहोगे? For first year, it is कि learn about things that are happening around you because your entire 11th and 12th was spent in just engineering. You don't know anything that else is happening. Learn about college, learn about cultural committees, and also learn a little bit about like current affairs. That might help you a lot, and use your college to your advantage. 4 साल में you get into committees and participate. For NIT Raipur people, a lot of committees exist. Get into any committee, volunteer. That would be a good idea. सेकेंड ईयर For second year, I will say now you are in your branch. Get to know about that branch. There is no more option of sliding, so you are now stuck with that branch. Even if you don't have interest in that, learn a little bit so that if you want to explore options later on in that field, you should have like the basic knowledge of that. Second year, people should not spend, I feel, like the summer vacations not doing anything. Learn something that would be very beneficial. And also, if you are in second year, before the college starts, at least have a rundown of कि ये मेरे subjects हैं, in these subjects ये चीज़ें रहेंगी, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता है. वो पहली बार जब प्रोफेसर खोलता है बुक, तभी आप प्रोफेसर खोल रहे हैं बुक, and then you are also like looking, you have no idea, then you are always playing the catch up game. So that is for second year.
third year be it's a high time. So for third year I would say get a good internship. Second year you might or might not have done a good internship, but get an internship. I highly implore you to get an internship and get a project. Get a project done, irrespective Maybe of whether get you an internship on the field that you're interested in going after fourth year. not necessarily explore. Even if you don't want, like, if you don't want to do an internship in electronics, for example, you are in electronics, you don't get any electronics about the internship, that's fine. Do it in mathematics, do it in like even like management, that's fine, but do an internship. But yeah, your preference should be ki what you want to do after fourth year. But most people are not clear even till third year ki they want to do CAT, they want to do a job, or abhi clear nahi tha. So I cannot blame other people. For fourth year, yeah, you are already in your fourth year, so uh, I would say just enjoy your life. This is not gonna come back for those फोर्थ में एंजॉय करने बोल रहे हो. yeah. Get a placement. और क्या करना है यार, get a placement, that's it. Enjoy your life. थोड़ा सा मास्टर्स माइनर और मेजर प्रोजेक्ट है उसको बना लो बस, और क्या है, लाइक लोड क्यों लेना. सर योर ओपिनियंस ऑन प्लेसमेंट, बिकॉज अभी रिसेशन चल रहा है, यू नो दैट वेरी वेल. ठीक है, रिसेशन चल रहा है ना, तो हमारे कॉलेज में उतनी अच्छी अच्छी कंपनीज नहीं आ रही. एंड जिनको सपोज जिनको नॉन कोर में जाना था, बट मजबूरी के चलते वो कोर में भी जा रहे हैं. बट लाइक मेरे हिसाब से दे आर सेटलिंग. मे बी मैं बहुत यंग हूँ आपसे, तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ. मे बी आई फील लाइक दे आर सेटलिंग एंड एवरीथिंग. What is your opinion on all of this? So what is the alternative if you don't settle? Like the alternative is like you sit back and you do off campus and you are not having anything to back it up. I mean that's a very dangerous option. Okay. Why I will tell. But I feel like if you are confident enough in your skill, तो आप off campus में निकाल लोगे. Yeah, so why not take a core वाला campus placement and then off campus में बैठो चुपचाप. नहीं, बॉन्ड हो जाता है ना कि 3 साल तक छोड़ नहीं पाते हो. बहुत सारे बॉन्ड आपको ऑफर हुआ जब आपने ज्वाइन ही नहीं किया तो काय कब नहीं. ऑफर लेटर मैंने तुम्हें आज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एटलीस्ट हमारे टाइम पे ये होता था कि आज मैंने तुम्हें ऑफर लेटर दे दिया कि ब्रो वेलकम टू माय कंपनी. ठीक है, अनलेस यू जॉइन तो द बॉन्ड डज नॉट गेट एक्टिवेटेड, राइट. इफ आई डोंट जॉइन योर कंपनी यू आर नॉट गोना पेनलाइज मी, राइट. तो उसके बीच में अगर मेरे को कहीं ऑफ कैंपस मिल जाता है, ग्रेट, आई विल गो एंड जॉइन देयर. इट्स द डे वन जहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, ऑन बोर्डिंग हो गई, तब से होता है. दैट इज माय नॉलेज माइट बी लिमिटेड, माइट हैव चेंज, थिंग्स माइट हैव चेंज. नहीं मतलब मेरे बहुत से सीनियर्स है इलेक्ट्रिकल की जो कि कोर में प्लेस्ड हो गए, बट दे वर गुड कोडर्स टू बी ऑनेस्ट, वेरी गुड कोडर्स. ओके, बट नाउ इवन इफ दे वांट they can't take any other job and now they are stuck there for 2-3 years. I mean यार, अगर if you get a good placement ना, कई बार तो ऐसा रहता है कि if you are really good in something, some companies, ऐसा हर बार होता नहीं है, but companies को बोलो कि यार ठीक है, I can clear this round of yours फलाना फलाना, but I have this bond, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, whatever bond. So sometimes company will buy out. That is very rare when you are a fresher, honestly. But then 2-3 साल रुको वहाँ पे and then come out. Sometimes you can talk to that core company या core वाली company के साथ कि यार let me go, I'm not enjoying it. Sometimes it could be mutual, but again, अगर if that is also not possible, then take a risk, break that bond and come out. So, but again, I would encourage यार 25, 20, even 28 तक take risks यार. Take risks. You can always go back, है ना. You can always go back. सेफ्टी नेट है तुम्हारे पास, NIT से पढ़ लियो, इतना तो होगा, कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाएगी, राइट. बेरोजगार तो नहीं बैठोगे, है ना. कहीं ना कहीं कुछ तो कर ही लोगे. सो टेक रिस्क. अगर रिस्क ले लोगे, कुछ अच्छी चीज़ें कर लोगे, बाहर निकल जाओगे, एक्सपोजर भी ले लोगे, हो सकता है यू माइट फेल, बट एक्सपोजर विल हेल्प यू मेक बेटर डिसीजंस लेटर ऑन. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल after graduation they are 21, 22, they decide this is what I want to do, and they are stuck in that field. Maybe they are sensing security, that is good for them, but they never try anything else. Then boy brother, they get married, they have kids, and then they are like buy a car, buy a house, that's it, and then they die. That's it. Retire होते हैं, they die. If you want that, great. I am not criticizing that life. That was not for me. But yeah, adventure चाहिए होता है. Adventure के साथ ऐसा था कि यार ठीक है, I had other ambitions. I had, as I told you, I had political ambitions a little bit. I had ambitions of like exploring the world. Geopolitics के ambition थे जो मैं नहीं कर पाता. अगर अभी मैं गवर्नमेंट जॉब था, I gave UPSC 3 times. I did not get selected. But अगर मैं UPSC में होता, फिर भी मुझे 4 बार सोचना पड़ता कि हाँ चलो आज उठ के पाकिस्तान चले जाते हैं, आज उठ के ईरान चले जाते हैं, ना, आज यहाँ चले जाते हैं. तो अगेन ठीक है, आई एम जस्ट लाइक मेकिंग आउट वॉट एवर द बेस्ट वॉज फॉर मी. अगर UPSC में हो जाता तो माई लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट. ठीक, IIT में नहीं हुआ, UPSC दिया, UPSC में नहीं हुआ, ठीक है. फेलियर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया. That's fine, but I have tried it at least. So you are kind of a person who go with the flow वाला. नहीं यार, डेड फिश गो विद द फ्लो, ऐसा कुछ नहीं. मैं अरे काउंटर करने वाला था, बोलते ना फिर से काउंटर करता मैं, बट आप I saw your line. अरे बच गए. तो आप बोलते ना कुछ कमेंट करते, मैं उसको कमेंट करता उसके बाद.
नहीं यार, I don't go with the flow. I feel like कि you should देखो दो चीज़ें होती हैं. One is कि you wait for things to happen to you, and the other thing is कि all right, I'm afraid of this thing. Let me take out my sword and go and find the dragon when it is a baby hiding in a cave. Before that, it becomes a big dragon and comes and like eats me alive. It's better that I go in its lair and slay that dragon when it's a baby. So yeah, I'm 30 right now. I have a bunch of experiences on my under my belt. I mean, I would not have done this when I was 40. The stakes change. I would have been having different responsibilities. So I was like, okay, I was afraid. Thought about, "Okay, take care. Should I do this? Should I do that?" But I took the risk. Here we are. तो जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत सारे जैसे हमारे कॉलेज में क्या ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग दैट इज द मेन सोर्स मतलब उधर जाना है बट व्हाट आर द अदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज दैट दे कैन परस्यू बिकॉज यू हैव परस्यूड मेनी थिंग इन लाइफ Yeah, I did not pursue a lot, I would say, when I was in 4 years of my college, but there were other opportunities that I pursued later on, which I can talk in very much detail. One was Harvard B4 Young Scientist program. I was a part of that. It was related to neuroscience. Then I was part of Harvard HPIR. This was in 2020. Harvard Project for Asian and International Relations, Governance and Geopolitics track. I was there. Then Google Local Guides Connect, which was done by Google Maps team, 2018, 2019. Then 15, I applied to certain places which I did not get selected. One was Campus France. Then the one that I got selected was National Program on Differential Equations, NPDE. Again, fully funded, IIT Guwahati. I am not complaining. You know, it was a very nice 2 months that I spent over there. Uh, yeah, so these are a few opportunities that I was glad to be a part of. BRICS 2023, I was a part of that. There was an international student exchange program that I went to when I was like very young. That fortunately my school had this program where I went, got a bunch of exposure, got to learn new things. That is how I got an interest in learning foreign languages. Uh, yeah, I think these are few opportunities. I keep talking about these opportunities on my Instagram, on LinkedIn pages. But yeah, these were the ones that I applied. Campus France में some of my friends got through. Marie Curie fellowship होती है. CERN की fellowship होती है, which I was talking about earlier. CERN की internship होती है. So I know people who have gone there. एक हार्वर्ड का क्रॉसरोड प्रोग्राम होता है. I was not eligible for that, but I know some people who went there. So yeah, there is no shortage here. Honestly, I will tell you, there is no shortage of money in this world. No shortage of money in this world. It's just like if you can express yourself in a good way and you are in the right place at the right time, people are ready to follow. communication is the key Perhaps, yeah, the way you can talk about yourself and the way you can represent yourself, I think that is all that matters. And another thing that matters is exposure. If you know about something, then only you will apply for that. If you don't even know about that, then you will never apply. Like today, I was giving this lecture to people, right? And I was asking how many people know about this, how many people know about that. A lot of them don't know the exposure. That is the difference between us and perhaps other colleges. कि हमारे पास exposure की कमी है. And yeah, the connection between alumni and students is not that strong. I feel that could be stronger. people don't really understand the value of having a good connection with the senior and alumni here. Yeah, Like I have seen juniors fighting over the seniors over unnecessary things. yeah. बट मतलब मेरा आज तक कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ बट आई जस्ट मतलब मैं जो भी जितने सारे क्लाइंट्स या फिर जो भी कुछ मैं हैंडल करता हूँ ना कंपनी जो भी जस्ट बिकॉज आई हैड अ कनेक्शन विद अ सर्टेन सीनियर और सर्टेन एल्यूमिनी एंड बोथ हेल्प किए मेरे को So yeah, that is, I feel that is how it is, right? India is a very funny place. Yeah, यहाँ पे everybody is related to everybody. Everybody is connected to everybody. So use that connection, man. Use that connection, not for gossip, but for like furthering your career. And a lot of people will want to help you. It's just like you have to reach out to them. Yeah. सर आप कॉलेज में थे आप एक जमाने में थे अभी नया जमाना है आई एम नॉट मेकिंग यू साउंड ओल्ड बट I am old, yeah. I'm 30. बट लाइक यू लुक यंग यू लुक लाइक 20 to 23 मैक्स आप जब आए आज और आपके जमाने में क्या क्या आपको डिफरेंस लगा कॉलेज में I mean, the infrastructure has improved considerably. पहले हमारे टाइम पे तो ऐसा लगता था NIT की जो बिल्डिंग है ऐसा कोई स्पेसशिप आके गिर गया है ना स्पेसशिप में क्लास लग रही है ऐसा लगता था अभी it has improved considerably. It's always fun to catch up with the old like the teachers that taught me. Abhi I met a few people and they were सौरभ सर
सौरभ सर, लता मैम, देवाशीष सर, तो इन लोगों से मिलके they were very nice, felt very nice. I felt a warm welcome from them. And also students are still respectful. वो एक Gen Z की हमारे mind में रहती है, मेरी generation में भी think कि यार ये Gen Zs they don't know how to respect. Sir, telling you the truth, not everyone knows how to respect, but जो पता है इनको, they respect you very nicely. Yeah, I mean nobody's asking you to like Respect them. yeah. मतलब respect, एक the bare minimum respect होना चाहिए कि यार you talk with decency with anyone, वो junior हो junior हो, वो decency बस होनी चाहिए. So हम लोगों को ये लगता है like I feel कि Gen Z man, they don't know how to respect. I've had some bad experiences, like very rare experiences. 1,000 people will talk to me and everyone is nice. There is like one guy who will be like, और अर्चित कैसा है? पड़ोसी हूँ मैं तेरा, मामा का लड़का लग रहा हूँ मैं तेरा. So that is like that is throws you a little bit off, right? कि यार like आप उससे 10 साल बड़े हो, है ना? नहीं मामा नहीं. I was like ये क्या है यार? भाई तो शूटिंग पे आ गए. शूटिंग में मेरे टारगेट पे तुझे ही बोल सकता है. नहीं, all fun and games, but yeah, I mean I have no complaints. The younger generation has a lot of energy. You guys are doing all these things podcast ही तो में कोई नहीं कर रहा. No, I'm only doing. So I hope so कि आपको अच्छा लगा ये पॉडकास्ट. I was with a guy जो he have achieved many things and I hope so कि तुम्हारे सारे questions and everything was resolved. But still तुम्हारे भी कुछ questions रह गए, so you can reach out to him in LinkedIn. And yeah, तुमको जरूर टाइम लग जाएगा इनका पार्ट पढ़ने में because it is very big. Thank you.